Hello viewers, welcome to my YouTube channel Vibrating D Himta. If you want more notification from my channel, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो and you want to know more about different topics and subjects, don't forget to subscribe, like, share and comment. Dear viewers, in today's video I'm going to tell you about the use of should. How to use should. Should का प्रयोग कैसे करें. Although I have already made one such video on the same topic, even mentioned that how we can use should to give advice, opinion, recommendations, talk about obligations, talk about probability and expectations, talk about conditional mood. There is lot more to know. लेकिन यह क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये कैसे पहचान करें, how to identify that where we have to place should, कि हमें should का यूज कहां करना है. Let me give you 3 हिंदी एग्जाम्पल्स. शुड का हिंदी में मतलब होता है चाहिए. ऑलराइट, अब हमें कुछ करना चाहिए. मैं क्या करूं? अब हम उसे कैसे बुलाएं? These 3 हिंदी sentences will help you to understand that where we can place and where we can use should. हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चाहिए, ऊ, करूं, ए, बुलाए, ये 3 शब्द आए तो समझ लीजिए कि हमें should का यूज करना है. I hope you understood. Dear viewers, if you want to know that how to use should be how to use should have, how to use should have been and should had, you have to stay with me till the end of this video. इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी हो सकता है, इवन थर्ड पार्ट भी हो सकता है, but it has great knowledge to know. You must watch. Stay with me. Dear viewers, as I said that how to use should. लेकिन should कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, इस चीज के लिए ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम should का यूज कैसे करेंगे. Dear viewers, अगर किसी हिंदी के सेंटेंस का अंत चाहिए, ऊ, ए से हो तो वहां शुड का यूज किया जाता है. उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिए, अब हमें कुछ करना चाहिए. नाउ वी शुड डू समथिंग. मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? अब हम उसे कैसे बुलाएं? हाउ शुड वी कॉल नाउ? हैविंग सीन दीज सेंटेंसेस दैट हाउ फर्स्ट सेंटेंस एंड्स विद चाहिए, सेकंड सेंटेंस एंड्स विद ऊ की मात्रा से एंड थर्ड सेंटेंस में ई की मात्रा से खत्म होता है. Therefore, there will be the use of should. ये जानने के बाद कि हम कहाँ पे should का यूज कर सकते हैं, now is to know that हम should का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ करें. हम सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ, लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल, सभी के साथ should का यूज करते हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. Dear viewers, now let's try to understand कि हम should का यूज अपने एक्सप्रेशन में किस सिचुएशंस के लिए करते हैं. गिव एडवाइस, सलाह देने के लिए. मेक recommendations, opinion, talk about obligation, duties, talk about probability and expectations, express the conditional mood. After lest भी should का यूज किया जाता है. Should is the past tense of shall in indirect speech. How we can use, I will let you know later part of the video. Shall और should या should और shall हमें क्या बताते हैं? That is also I will tell you in the later part of my video. The auxiliary verb should is invariable. Invariable here means it is same with every subject. There is only one form. Should की एक ही form है, वो should है, जो हमेशा should ही रहेगा. Let's understand with the help of example that how we use should to give advice both in the present tense and in the past using the following structure or formula. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब, प्रेजेंट पे एडवाइस देनी है तो, और पास्ट में शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. राइट, देयर आर सम एग्जांपल्स. दे शुड स्टडी मोर इफ दे वांट टू पास देयर एग्जाम. यू शुड डू मोर ट्रैवलिंग. यू शुडंट ड्रिंक सो मच बियर. यू शुड सी अ डॉक्टर. आई वाज सो वरीड अबाउट यू. यू शुड हैव कॉल्ड. आई एम सॉरी दैट आई एम लेट फॉर वर्क. I should have woken up earlier. All these examples are giving us advice in present or
past. Now I'm going to presenting you very interesting table to understand about the advice, that how we can use should in advice. Look at this formula and verb form in the advice construction. I don't think you should work so hard. Use I don't think you should, the base form of the verb in a statement. You ought to work less. Use you ought to the base form of the verb in a statement. Same is here with others. See yourself. Viewer, let me tell you that how we can use should for duty and obligation. जब हम duty और obligations की बात करते हैं, this is the kind of duty and obligations जो हम आत्मिक भाव से करते हैं, कर्तव्य भावना और वचनबद्धता, which we must do as favor. Alright, should can be used with pronouns of all the three persons to talk about duty and obligations. How? Let's see with the help of these examples. We should help the poor and the needy. We should not lie. We should all work for the common good. You should pay the fee in time. All these examples let us know that how we can use should to express duty and obligations. Viewers, next we will see that how we can use should in conditional clauses expressing possibilities, suppositions, like if she should come, agar wo aaye, ask her to wait. This is just a possibility. Should it rain, agar barish hui, we will cancel the trip. हम trip cancel करेंगे. Should is often used in main clauses, which are preceded or followed by a clause expressing unreal conditions को जो express करता है. Okay, if I were you, अगर मैं आपकी जगह होता, I should accept this offer, तो मैं इस offer को accept करता. No Sam, I shouldn't do that if I were you. अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? I shouldn't do that. Note that this kind of sentence is often used to give polite advice or gentle admonition as well. Viewers, should is often used to express possibility or likelihood. Like I should be able to finish this work in time. You should be able to beat him. Okay, able to beat him. इन दोनों sentences में possibility, likelihood को express किया गया, संभावना को व्यक्त किया गया है. Now let's study that how we can use should after last. Should is the only auxiliary सहायक क्रिया that can be used after lest, जिसका use lest के बाद किया जा सकता. Like work hard lest you should fail in the examination. Watch and pray lest you should fall into the temptation. यहाँ lest का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि. Dear viewers, I hope that you understood that how to use should after last, expressing possibility, expressing obligations, duties, and giving advice. Let's try to understand that how we can use should as past of shall in indirect speech. Like the officer said, the scoundrel shall be given a good beating. How can you use should in the indirect speech? The officer said that the scoundrel should be given a good beating. There is one interesting fact to know about the use of should and shall. Should expresses less possibility than shall. जब भी हम shall या should का यूज करते हैं तो should में किसी भी चीज के होने की संभावना कम होती है. Like I shall be able to meet Amit. I should be able to meet Rani. Here the first sentence expresses a greater possibility of the event, meeting Amit, taking place. Dear viewers, that was something about the use of should, that how and where and in which situation we should use should. Now let's see that how we can use should in affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences, and in interrogative negative sentences. See, formula for the formation of affirmative sentence is subject plus should plus verb plus object. Mostly you will see that how we use first form of the verb right after should. Like आपको शादी कर लेनी चाहिए. You should get married. उसे 4 बजे तक खाना बना लेना चाहिए. She should finish cooking at 4 o'clock. Rahul should quit fighting. We should respect our elders. आपको फोटो खिंचवा लेनी चाहिए. You should get a picture clicked.
उसे जिद छोड़ देनी चाहिए। ही शुड क्विट इंसिस्टिंग। आपको अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। यू शुड कीप योर कूल। यू शुड कंट्रोल योर एंगर। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। You should serve your parents are some examples in affirmative sentences. Now, negative. Negative sentences में should plus not का use होता है। Formula subject plus should plus not plus verb plus object. Like उसको गाली नहीं देनी चाहिए। He should not abuse. He shouldn't abuse. आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। You should not drink and drive. You shouldn't defame someone without any reason. आपको फालतू में किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ को स्मोक नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ शुड नॉट स्मोक। आपको पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए। यू शुड नॉट और यू शुडंट बिकम स्टोनी हार्ट। उसे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। शी शुड नॉट बीट यू। आपको इतने लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। यू शुडंट कीप लॉन्ग हेयर। आपको किसी को धमकी नहीं देना चाहिए या नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट थ्रेटन समवन। How to use should with interrogative sentences? Formula is should plus subject plus verb plus object plus question mark. There are some examples to know. क्या मैं तुम्हें फोन करूं? Yes, ऊ बड़ा ऊ. Should I call you? क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं? Should I forget her forever? क्या हम हार मान ले? Should we give up? क्या मैं तुम्हारा फ़ोन टेबल पर रख दूँ? Should I put your phone on the table? Should I leave my family for you? क्या उसके लिए मैं अपने परिवार को छोड़ दूँ? क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? Should I meet her? क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? Should I ask you something? Formation of interrogative negative sentences can be done with the help of this formula, like should plus subject plus not plus verb plus object and question mark. Like क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाऊं? Should I not meet my responsibilities? क्या उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? Should he not think so much? क्या राहुल को शराब नहीं पीनी चाहिए? Should Rahul not drink? क्या हम मैच ना खेलें? Should we not play the match? क्या वो अपना काम ना करे? Should he not do his work? क्या मैं तुम्हारी तारीफ ना करूं? Should I not praise you? Dear viewers, there is lot more to know about the use of should. Now, there are some examples which we can use with the WH family. See yourself first in the affirmative, then in the negative. Dear viewers, I hope you understood that how to use should and where we have to use should. Should का यूज बहुत सी सिचुएशन में होता है, जैसे कि एडवाइस के लिए, सजेशंस के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस। इवन शुड का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में शेल की जगह भी किया जाता है। शुड की पहचान सिर्फ चाहिए ही से ही नहीं होती है, बल्कि अगर हिंदी के सेंटेंसेस के आखिर में ऊ या ए आए तो भी शुड का यूज होता है।